Great. So we are going to start a very, very important topic, and that is physiology of menstruation. अब physiology of menstruation समझाने से पहले I will have to tell you, okay, keep making notes. Notes बनाते रहो मेरे साथ में. All of you, take a register, take a pen and keep making notes with me. So now, इससे पहले कि we understand, okay, understood. Nursing ने भी join कर लिया है and Bishkek students ने भी join कर लिया है. I'm glad. चलो, let's concentrate on the topic and not on the live chat. So, first thing what you should understand is gametogenesis. Right? अब gametogenesis के लिए we need germ cell. And सबसे पहला most important question which can be asked in nursing as well as in FMGE exam is that from where are these germ cells derived? These germ cells, they are derived from epiblast. Germ cells are derived from epiblast. Now these germ cells, they will differentiate into either female germ cells or they will differentiate into male germ cells. Right? Female germ cell is oogonia and male germ cell is spermatogonia. Chromosome number of both of them is 46. Oogonia is 44 plus XX. Spermatogonia is 44 plus XY. Now, understand the process by which this oogonia is going to change into ova, and we do not use the term ova these days. आजकल हम ये term ova नहीं use करते, हम ये term use करते हैं female pronucleus. So ये process जहां से oogonia is going to get converted into female pronucleus. Good afternoon all of you. Chalo, quickly write down the notes. This process is called as oogenesis, and the process by which spermatogonia changes into sperm, this is spermatogenesis. Now, in order to understand the process of menstrual cycle, you should understand first a little bit about oogenesis. अगर oogenesis समझ में आ जाएगा तो फिर menstrual cycle भी हम समझाएंगे, right? So I am going to copy it, everyone. Now, just one small request. By chance you are not very quick at writing, this YouTube session is going to be there on YouTube. Maybe you can come back later and write, or नहीं तो photo screenshots खींचते जाओ. Clear? Oogenesis. Oogenesis. लो, I am waiting. Quickly screenshot खींच लो. And otherwise, this is going to stay there as well. Don't worry. Now, oogenesis begins in intrauterine life. Oogenesis का process begins in intrauterine life. Now, what happens is this oogonia is going to undergo mitosis. I hope all of you know
that there are two types of cell divisions, mitosis and meiosis. After mitosis, chromosome number remains the same. In meiosis, we have meiosis 1 and meiosis 2. After meiosis 1, chromosome number becomes half. After meiosis 2, chromosome number remains the same. ठीक? So oogonia में mitosis होगी and a primary oocyte will be formed. oogonia का क्रोमोसोम नंबर था 46, 44 plus XX. After mitosis, chromosome number remains the same. So primary oocyte ka bhi, it will be 46, that is 44 plus XX. Right? Now, this primary oocyte will undergo meiosis 1. But this meiosis 1 gets arrested. Right? Meiosis 1 gets arrested. And primary oocyte ने बदलना था secondary oocyte में, but then it is not getting able to convert. And now this primary oocyte is going to remain in arrested state. This arrest will be over at puberty. So this arrest gets over at puberty. So intrauterine life में start हुआ ये process. Primary oocyte बन गए, but primary oocyte are not being able to convert into secondary oocyte. So now what is going to happen? Now this primary oocyte is going to remain like this in intrauterine life, and when a baby will be born, तब भी उसकी ovary में primary oocyte होंगे, and till puberty primary oocyte रहेंगे. Clear? Now this primary oocyte, this is very important. This primary oocyte, it gets surrounded by the follicular cells of the ovary, right? So the follicular cells of the ovary are going to surround the primary oocyte. So if this is your primary oocyte, this will get surrounded by follicular cells, and this structure is called as a follicle. So इसका मतलब ovary में बहुत सारे follicles होते हैं. So ovary is a reservoir of many such follicles, right? And ये ऐसे ही रहेगा, ये follicles ऐसे ही रहेंगे till puberty. Now at puberty, the hypothalamic pituitary ovarian, HPO means hypothalamic pituitary ovarian axis gets mature, and hormone LH is released, which I'll tell you. All this I'm going to tell you just now in detail. And because of this, now the primary oocyte will get converted into secondary oocyte, and first polar body will be released. Right? So first polar body will be released. Now, after meiosis 1, the chromosome number becomes half.
right? So primary oocyte, which was 46, that is 44 plus XX, will form secondary oocyte, which will be 23 chromosome number, and first polar body chromosome number 23. Both of them 22 plus X, 22 plus X. Now, this arrest which was happening in meiosis 1, this happens in diplotin stage of prophase. प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट होता है, right? And at puberty, because the hypothalamic pituitary ovarian axis gets matured, the primary oocyte का जो ये arrest था is now over. So meiosis 1 is complete. Meiosis 1 is complete. The arrest is over at puberty. And from primary oocyte, secondary oocyte will be formed and first polar body will be released. Till here clear to all of you? Yes? Okay. Now this secondary oocyte, whose chromosome number is 23, that is 22 plus X, will undergo meiosis 2. But this meiosis 2 also gets arrested. And this time it is going to get arrested in metaphase. Right? Now imagine, when is this arrest going to get over? This arrest is over at the time of fertilization. Only if a female is about to get pregnant, then this arrest is going to be over. अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो ये अरेस्ट ओवर नहीं होता है. And once this arrest is over, ova is released, which is called as female pronucleus, and second polar body is released. Second polar body released. Because after meiosis 2, chromosome number remains the same. So ova ka bhi 23 and second polar body ka bhi 23. So this means कि ओवा हमारी बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा. एंड थ्रू आउट हर लाइफ एक फीमेल ईदर she's going to get pregnant once or twice or thrice, इससे ज्यादा नहीं होता, या maybe 4 times, not more than that. So this means ova is released only in the lifetime, either once or twice or thrice or 4 times. जब जब प्रेगनेंसी होगी केवल तभी ओवा रिलीज होता है, right? So then जो हम कहते हैं कि every month a female is ovulating, उसका क्या मतलब होता है? What is ovulation? So understand that release of secondary oocyte, from primary oocyte every month, that is what is called as ovulation. So ovulation में ova release नहीं होता. Ovulation का मतलब है that the primary oocyte is getting converted into secondary oocyte. meiosis 2 अरेस्ट के बाद कंफ्यूजन हो रहा है? क्या कंफ्यूजन हो रहा है? देखो कुछ भी नहीं है. meiosis 2 का जब अरेस्ट हुआ तो ये जो meiosis 2 है ये कंप्लीट होगा only when the sperm enters into a female's body. And when sperm comes very close to the secondary oocyte and ये हो जाता है अब कि अब ये फीमेल प्रेग्नेंट होगी, उसी समय ये सेकेंड meiotic division का जो अरेस्ट है it gets over. yes भाई होगा. सेकेंडरी oocyte ओवा तभी बनाएगा
जब स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर कर जाएगा, right? So imagine here, see, this is not like this. So this over here is secondary oocyte. सेकेंडरी oocyte के बाहर सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा. सन के शेप में ऐसे सेल्स होते हैं, राइट? अब क्या होता है, एंड यहां पे एक मेम्ब्रेन भी होती है, जोना पेलिसिटा. तो स्पर्म क्या करते हैं, दे अटैच टू कोरोना रेडियाटा, एंड फिर उनमें से around 300 sperms are going to attach to corona radiata of the secondary oocyte. So this over here is secondary oocyte. इनमें से एक स्पर्म एंटर करता है. जैसे ही एक स्पर्म जोना पेलिसिडा को क्रॉस करता है, वैसे ही ये सेकेंडरी oocyte चेंज हो जाता है इनटू ओवा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो जैसे ही स्पर्म जो है, एक सिंगल स्पर्म आके अटैच होता है टू जोना पेलिसिडा, वैसे ही ये डिवीजन कंप्लीट हो जाता है एंड सेकेंडरी oocyte नाउ गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओवा. तो ओवा तभी बनेगा जब फीमेल इज अबाउट टू गेट प्रेग्नेंट, राइट? अदरवाइज ओवा नहीं बनेगा. सो इफ दैट मीन्स कि ये जो डिवीजन है मियोसिस 2 का जो अरेस्ट है, ये ओवर होगा ओनली एंड ओनली इफ अ फीमेल इज अबाउट टू गेट प्रेग्नेंट, एंड ओवा तभी बनेगा जब फीमेल इज अबाउट टू गेट प्रेग्नेंट. एंड एंटायर लाइफ टाइम में प्रेगनेंसी हैपेंस ईदर वंस और ट्वाइस और थ्राइस, या कईयों में मैक्सिमम 4 times. सो ओवा का रिलीज जो होता है, इट हैपेंस ईदर वंस और ट्वाइस और थ्राइस. Only if she is becoming pregnant, then the ova is getting released. But ovulation happens every month, right? So ovulation जो होता है वो every month होता है, and ovulation का मतलब है release of secondary oocyte from primary oocyte every month. Clear to all of you? Yes. So have you understood? meiosis 1 का arrest तो every month over होता है. Every month ovulation happens. Every month a secondary oocyte is released from primary oocyte, and that process is called as ovulation. But meiosis 2 ka arrest will happen only if the female is about to get pregnant, right? Now, because release of secondary oocyte from primary oocyte is called as ovulation. So if I ask you 2 questions, first polar body is released at. So when is first polar body released? First polar body is released at the time of ovulation. And when is the second polar body released? Second polar body is released at the time of fertilization. At the time of fertilization. Clear? So with this basic concept, we are going to talk about menstrual cycle now. Now, menstrual cycle is going to begin with ovarian cycle. And for ovarian cycle to happen, या menstrual cycle to happen, at puberty what happens? At puberty, HPO axis gets matured. HPO axis का maturation होगा. H का मतलब hypothalamus. Hypothalamus release करेगा GnRH. Hypothalamus से hormone release होता है GnRH. This GnRH is released in a pulsatile manner. Pulses में release होता है GnRH. This GnRH acts on anterior pituitary. And anterior pituitary से hormone निकलता है FSH. FSH. FSH is follicle stimulating hormone. So now what is going to happen?
ये FSH क्या करेगा? Follicles. Why I had to tell you entire oogenesis? Because I wanted to ask you what is a follicle. So what is a follicle? A follicle is a primary oocyte which is surrounded by follicular cells. So FSH क्या करेगा? It is going to stimulate a large number of follicles. So FSH will stimulate a large number of follicles, right? So FSH ने बहुत सारे follicles को stimulate कर दिया. Now, then it acts on the follicular cells and follicular cells को वो दो टाइप के सेल्स में कन्वर्ट कर देगा, granulosa cells and theca cells. Clear? So it stimulates a large number of follicles and बहुत सारे follicles stimulate हो जाएंगे and उनके जो follicular cells हैं, they are going to get converted into granulosa cells and theca cells. So now what FSH is going to do? FSH acts on granulosa cells and granulosa cells say FSH will release two hormones. It will release estrogen and inhibin B. Clear? Now please understand here again. हुआ क्या puberty पे? Puberty पे HPO axis got matured. From the hypothalamus, GnRH was released in a pulsatile manner. GnRH acted on anterior pituitary, and from anterior pituitary, hormone FSH is released. This FSH stimulates a large number of follicles, and उनके follicular cells को वो convert करा देता है into granulosa cells and theca cells. And from granulosa cells, FSH is going to release two hormones, estrogen and inhibin B. So if I ask you a very simple question, and that question is many times asked, ovarian cycle is initiated by. Ovarian cycle is initiated by. What will your answer be? Ovarian cycle is initiated by. So our answer is going to be FSH. So it is FSH which acts on the ovaries. Now, ये जो inhibin निकला, कहीं पर भी जब inhibin निकलता है, whether वो male में निकले, whether वो female में निकले, whenever inhibin is released, इसका एक ही function होता है कि it has a negative feedback on FSH. It has a negative feedback on FSH, right? And ये जो estrogen निकलेगा, estrogen will have three functions. Estrogen is going to perform three functions, right? What are the three functions of estrogen? Three functions of estrogen. Now, the three functions of estrogen are, number one, it will proliferate the uterine endometrium. So it acts on the uterus and it proliferates the uterine endometrium. Number two, it has a negative feedback on FSH. And number three, it has a positive feedback on LH. So anterior pituitary से एक और hormone निकलता है, that is LH, and estrogen will have a
positive feedback on this LH. It will have a negative feedback on FSH. Clear to all of you? Now we are going to just see in तीनों functions के application क्या है. First function is कि estrogen proliferates the uterine endometrium. Now, because estrogen proliferates the uterine endometrium, that is why estrogen can lead to endometrial cancers, because it proliferates the uterine endometrium. And this is the reason why estrogen should never be given alone. Estrogen should never be given alone to a female with intact uterus. अगर किसी female का uterus intact है, you are never going to give her estrogen alone, because estrogen अगर हमने alone दिया, it can lead to endometrial cancer, right? That is the application of the first function, and that is estrogen proliferates the uterine endometrium. Now, application of the second function, that estrogen has a negative feedback on FSH. Now, just now I was telling you, under the effect of FSH, a number of follicles got stimulated. Now, what is estrogen doing? Estrogen is decreasing FSH. Now, because estrogen is decreasing FSH, all the stimulated follicles, they die. In other words, they undergo apoptosis. तो सारे stimulated follicles की death हो जाएगी except one follicle, which will be called as dominant follicle. Dominant follicle. ये dominant follicle इसलिए बच जाता है because it has maximum receptors of FSH. It has maximum receptors of FSH. तो एक follicle बच गया, which will be your dominant follicle. And this dominant follicle will continue to grow. Right? Now, what is going to happen is, okay, so I am repeating. What was happening was, under the effect of FSH, a large number of follicles, they were stimulated. अब estrogen ने क्या किया? Estrogen ने FSH को decrease कर दिया. जब FSH decrease हो जाएगा, तो जितने stimulated follicles थे, all of them are going to die, except one follicle, and that follicle will be called as dominant follicle. ये single follicle की death इसलिए नहीं हुई because it had maximum receptors of FSH. And ये dominant follicle will continue to grow. So Shabnam, have you understood? Yes, Shabnam, you had asked me to repeat. समझ में आ गया? All of you, show me a thumbs up if you've understood this. Okay. So now, what is going to happen? One follicle, which is your dominant follicle, continues to grow. तो चलो अब हम ग्रो कराते हैं follicle को. So this dominant follicle is growing. ठीक? Now, ये जो dominant follicle grow करता है, ये बहुत सारी stages से pass करता है. For example, pre-antral stage, antral stage, हमें इनकी details नहीं याद करनी, and Graafian follicle.
These are various stages of growth जिसकी डिटेल नहीं याद करनी. You just need to know कि जब dominant follicle grow करता है तो वो बहुत सारी stages से pass करता है, like pre-antral stage, antral stage and Graafian follicle. Right? Are you understanding? Now, what is the third function of estrogen? The third function of estrogen is it has a positive feedback on LH. Now, because estrogen has a positive feedback on LH, what is going to happen? The levels of LH suddenly increase. The levels of LH suddenly increase. And this sudden increase in LH is called as LH surge. This sudden increase in LH is called as LH surge. Clear? Now, so till here I have told you three functions of estrogen. Estrogen was proliferating the uterine endometrium. Estrogen had a negative feedback on FSH, and estrogen had a positive feedback on LH. So on one side in the ovary, because estrogen had a negative feedback on FSH, so all follicles had died, just one follicle was remaining. And ovary में ये follicle बड़ा होता जा रहा है and वो various stages से pass कर रहा है, like preantral, antral and Graafian. Simultaneously क्या हो रहा है? Simultaneously, estrogen had a positive feedback on LH, because of which the levels of LH had suddenly increased, which was called as LH surge. अब कुछ समझ में आ रहा है? Just now I told you when we were talking about oogenesis, I told you that at puberty, the arrest is getting over. The meiosis 1 arrest is getting over because HPO axis is getting matured and LH is being released. Just now I told you this. Yes? So अब हमें ये समझ में आ गया कि अब वो स्टेज आ गई है जब LH रिलीज हो गया है and now ovulation has to happen. So now what this LH is going to do, due to LH surge, what is going to happen? Due to LH surge, the primary oocyte in the follicle will get converted into secondary oocyte. The arrest of meiosis 1 is over. And the primary oocyte will now get converted into secondary oocyte, and this process is called as ovulation. And plus what is going to happen? The follicle, ये जो follicle रह गया, follicle gets converted into corpus luteum. Corpus luteum. Right? So primary oocyte convert हो गया secondary oocyte में, and obviously first polar body will be released. And ये जो follicle था, that gets converted into corpus luteum. So till here, have all of you understood? We will be doing questions related to it, but first understand the cycle and then I will tell you all questions related to it. Yes? Okay. Now what is going to happen is, now your corpus luteum has formed. Ovulation हो गया and corpus luteum has formed. Now corpus luteum grows. Now corpus luteum grows. Now this corpus luteum will start growing. Clear? Now tell me,
Because of which hormone was corpus luteum formed? Corpus luteum इसलिए बना क्योंकि ovulation हुआ, and follicle जो था that got converted into corpus luteum, and ovulation हुआ due to hormone LH. In other words, if I ask you which hormone is responsible for formation and maintenance of corpus luteum, your answer will be LH, right? Luteinizing hormone, corpus luteum. So the hormone responsible for growth and maintenance of corpus luteum is LH. Right? Now, I was telling you that corpus luteum will grow. Now, this corpus luteum secretes 3 hormones. It will secrete mainly progesterone. Mainly, it will secrete progesterone. But apart from that, it will also secrete estrogen and inhibin A. So progesterone, estrogen, and inhibin A. These are the hormones which corpus luteum secretes, in which the main hormone is progesterone. Clear to all of you? Now, so now what is going to happen? What is the function of progesterone? अब ये जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज हुआ इसका फंक्शन क्या है? ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है, it will perform 2 functions. Number 1, it will act on uterine endometrium, and it is going to support the endometrium. तो ईस्ट्रोजन ने क्या किया था? एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट किया था. अब ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है सीमेंट का काम करेगा, ये इस एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करेगा. दिस इज कॉल्ड एज secretory action. Secretory action. That is one thing which progesterone does. Now tell me, FSH ने एक्ट किया था ग्रैन्युलोसा सेल्स पे, एंड ग्रैन्युलोसा सेल से निकला था ईस्ट्रोजन, एंड जैसे ही ईस्ट्रोजन निकला था, इट हैड अ नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH. LH की वजह से बना कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम ने बनाया प्रोजेस्ट्रॉन. जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा, what will it have? It will have a negative feedback on LH. So these are 2 works which are done by progesterone. It will support the endometrium and it will have a negative feedback on LH. What will be the function of estrogen and inhibin? Estrogen and inhibin का same function रहेगा. They will have a negative feedback on FSH. Right? Now, because progesterone will have a negative feedback on LH, and just now I told you that the hormone which is needed for growth and maintenance of corpus luteum, जो hormone corpus luteum को grow करा रहा है, जो hormone corpus luteum को maintain करा रहा है, वो है LH. And progesterone ने उसी hormone को कम कर दिया. तो जब progesterone LH को कम कर देगा, so what is going to happen to corpus luteum? Corpus luteum will start degenerating. Right? And जब corpus luteum degenerate करना शुरू करेगा, तो all hormones formed by corpus luteum
all hormones formed by corpus luteum will decrease. All hormones formed by corpus luteum will decrease. Now you are going to tell me कौन कौन से हार्मोन डिक्रीज होंगे? नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन, नंबर 2 estrogen, number 3 inhibin A. All three of them are going to decrease. Yes, यहां तक समझ में आ गया? अब because all these hormones are decreasing, progesterone is decreasing, estrogen is decreasing and inhibin A is decreasing. अब इस सब की वजह से क्या होगा? बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज करेगा तो जो सपोर्ट था टू द एंडोमेट्रियम दैट विल बी लॉस्ट. तो वॉल में से सीमेंट चला गया एंड वॉल में से जब सीमेंट चला जाएगा तो क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी वॉल विल बी शेड. सो एंडोमेट्रियम इज शेड एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज menstruation. राइट? इसके अलावा सी प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन इज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट. ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है. तो जब प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होगा इट विल लीड टू वेसोकंस्ट्रिक्शन. There will be vasoconstriction. इस vasoconstriction की वजह से PGF2 alpha will be released. And इस PGF2 alpha की वजह से there will be pain in abdomen which is called as dysmenorrhea. So pain at the time of menstruation is called as dysmenorrhea. This is primary dysmenorrhea. Yes? Now, because estrogen and inhibin, they are also decreasing. So now the negative feedback on FSH is lost. The negative feedback on FSH is lost. तो फिर से FSH के लेवल्स बढ़ेंगे एंड फिर से ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. सो फिर से क्या होगा? फिर से FSH एक्ट करेगा फॉलिकल्स पे, बहुत सारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा. राइट? एंड देन जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगा ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स में. फिर से ग्रैन्युलोसा सेल से ईस्ट्रोजन निकलेगा. ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करेगा. इट विल हैव अ नेगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच एंड अ पॉजिटिव फीडबैक ऑन एलएच. बिकॉज ईस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक होगा ऑन एलएच तो लेवल्स ऑफ एलएच विल सडनली राइज. And this is what is called as LH surge. And because of this LH surge again, क्या होगा? इस LH surge की वजह से, इस LH surge की वजह से फिर से ovulation होगा. And जब ovulation होगा तो again primary oocyte convert हो जाएगा secondary oocyte में and follicle convert हो जाएगा corpus luteum में. Right? कॉर्पस लुटियम क्या बनाएगा? कॉर्पस लुटियम बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन. अब जब प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन फिर से दो काम करेगा. वो एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करेगा एंड इट विल हैव अ नेगेटिव फीडबैक ऑन एलएच. तो लेवल्स ऑफ एलएच विल डिक्रीज. बिकॉज लेवल्स ऑफ एलएच विल डिक्रीज तो जो कॉर्पस लुटियम है उसकी डेथ हो जाएगी. एंड जब कॉर्पस लुटियम की डेथ होगी तो जितने हार्मोन्स थे जो कॉर्पस लुटियम ने बनाए थे वो सारे फिर से डिक्रीज हो जाएंगे.
तो प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होगा, ईस्ट्रोजन डिक्रीज होगा, इनिबिन डिक्रीज होगा। एंड जब प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होगा तो जो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को सपोर्ट कर रहा था वो प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, तो अब क्या होगा, पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम विल बी शेड, राइट, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, वो सारे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज करता है तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड स्मूथ मसल्स कहां पे होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं। तो जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी देयर विल बी वेजो कंस्ट्रिक्शन। इस वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इस वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से PGF2 अल्फा विल बी रिलीज्ड, राइट, एंड पेशेंट को पेन होगा इन अब्डोमेन। ये PGF2 अल्फा जो है ये पेन करेगा इन अब्डोमेन, राइट, that is what is called as dysmenorrhea. And because estrogen and inhibin decrease करेंगे तो जो negative feedback था on FSH that will be lost, the levels of LH will increase, and again a new cycle will start. Have you all understood menstrual cycle? बेसिक समझ में आ गए, सो दैट आई कैन डील विद द डीपर पॉइंट्स एंड वी कैन डील विद क्वेश्चंस जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पूछे जाते हैं। एनी कंफ्यूजन्स यहां पे, लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स। बेसिक समझ में आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल? अभी हम 3-4 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे क्वेश्चंस के साथ, तो और समझ में आ जाएगा। ओके सुदीप्ता, अगर समझ में नहीं आया होल्ड ऑन, ठीक है, होल्ड ऑन, अभी मैं बता दूंगी। अभी हम फिर से जब बार बार मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे समझ में आ जाएगा। नाउ I want all of you to draw this diagram with me. जैसे ही ये डायग्राम करोगे वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल और समझ में आ जाएगी। सो हम बना रहे हैं 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये है फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल, ये है 28th डे ऑफ द साइकिल, राइट। नाउ फर्स्ट डे पे क्या होता है, FSH एक्ट करता है ऑन फॉलिकल्स एंड फॉलिकल से रिलीज कराता है ईस्ट्रोजन। सो FSH फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा एंड फॉलिकल से रिलीज कराएगा ईस्ट्रोजन। अब जिस पेज पे आप लोग ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हो उस पेज को ब्लैंक छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे जाओ एंड जो भी मैं क्वेश्चंस लिखवा रही हूं नेक्स्ट पेज पे वो क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, ovarian cycle is initiated by, कौन से हार्मोन इनिशिएट कर रहा है ओवेरियन साइकिल को, FSH, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, FSH इज रिलीज्ड फ्रॉम, कहां से आया FSH? FSH is released from anterior pituitary. Clear? Now, FSH ने act किया on granulosa cells and from granulosa cell estrogen is released. So my next question to you is,
estrogen is formed by, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम हमेशा ये देते हैं ना कि estrogen is formed by ovary, बट ओवरी से बेटर आंसर क्या है कि estrogen is formed by follicle, एंड follicle से बेटर आंसर क्या है, it is formed by granulosa cells of the follicle. So अगर क्वेश्चन में ये आंसर दिया है, दिस इज द बेस्ट आंसर, granulosa cells of the follicle. Second best answer is follicle, and third best answer is ovary. Right? Now, what is estrogen going to do? Estrogen is going to do three functions. It will proliferate the uterine endometrium. It will have a negative feedback on FSH. So ये FSH पे इसका negative feedback होगा, and it will have a positive feedback on LH. Right? Now, because estrogen had a negative feedback on FSH, all the follicles die except one follicle, and that one follicle is called as dominant follicle. So केवल एक follicle रह जाएगा, which will be called as dominant follicle. Now, have you understood till here? ये dominant follicle continue करेगा to grow. Now, because estrogen has a positive feedback on LH, so the levels of LH will suddenly increase. There is sudden increase in LH, which is called as LH surge. So the levels of LH will suddenly increase, and that is called as LH surge. So my question to you is, very, very important question. LH surge is initiated by, कौन से हार्मोन ने LH surge को initiate कराया? Which hormone? Estrogen. LH surge is initiated by estrogen. Next question. Estrogen levels. Now, this question is not for the nursing students. This question is for the FMGE doctors who are listening to this lecture, right? Estrogen levels, if they are more than 200 picograms, PG is picograms, for 48 hours, then it leads to LH surge. So if estrogen levels are more than equal to 200 picograms, then it leads to LH surge. Right? Then, have you copied till here, all of you? Yes? Next question. Ovulation occurs due to which hormone brings about ovulation? Ovulation occurs due to LH surge. ये सबके लिए question है, and this is a very, very important question. Ovulation occurs due to, so ovulation occurs due to LH surge. Another very important question. Just before ovulation, just before ovulation,
Please remember, there is both LH plus FSH surge. लेकिन ओव्यूलेशन होता है ड्यू टू LH सर्ज. But before ovulation, there will be LH and FSH surge. Clear? Next question. So if this is ovulation, this is LH surge, and this over here is ovulation. So if I ask you, what is the time gap between LH surge and ovulation? कितना टाइम इंटरवल होता है between LH surge and ovulation? Very, very important. Best answer is 32 to 36 hours. 32 to 36 hours. But kabhi in your questions, 32 to 36 hours is not given. Then the second best answer is 24 to 36 hours. Right? Now, the time at which LH surge begins, ये वाला टाइम, ये तो होता है LH सर्ज. जहां पे LH मैक्सिमम होता है उसको कहते हैं LH पीक. जब LH बढ़ना शुरू हुआ, that is the beginning of LH surge. So क्वेश्चन पूछा जाए कि LH surge and ovulation के बीच में कितना टाइम गैप है, it is 32 to 36 hours. बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि LH पीक एंड ओव्यूलेशन में कितना टाइम है, LH पीक मतलब वो लेवल ऑफ LH जब वो मैक्सिमम हो गया, तो LH के मैक्सिमम होने एंड ओव्यूलेशन के बीच में कितना टाइम है? दिस इज, सॉरी एक्सक्यूज मी, 10 to 12 hours. Both these are very, very important questions and both of them have very different answers. So read your question very carefully. LH surge and ovulation के बीच में टाइम गैप पूछ रहे हैं या LH peak and ovulation के बीच में टाइम गैप पूछ रहे हैं? Clear? So go back to your flow chart. अब फ्लो चार्ट में हमने क्या बनाया था? फ्लो चार्ट में हमने ये किया था कि ईस्ट्रोजन निकला, ईस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट किया, ईस्ट्रोजन हैड अ नेगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच and estrogen had a positive feedback on LH. Now, because estrogen had a positive feedback on LH, the levels of LH suddenly increase, which is called as LH surge. अब इस LH surge की वजह से ovulation होगा. And 28 day cycle में ovulation होता है on day 14. Right? Now, the next question which they ask is, what is the size of the follicle just before ovulation? Important for both of you, for nursing students as well as for foreign medical students. What is the size of the follicle just before ovulation? So just before ovulation, the size of the follicle is 18 to 20 millimeters. Right? So I want all of you to write this question also in the questions which you are writing. So the next question is size of the follicle. They may say Graafian follicle. Instead of saying follicle, question में Graafian follicle भी लिखा हो सकता है. So size of the follicle just before ovulation, and that is 18 to 20 millimeters. Right? Okay. वापस अपने डायग्राम पे आओ. So now tell me, इसी डायग्राम में फिल करो, time between LH surge and ovulation. कितना टाइम?
32 to 36 hours. Time between LH peak and ovulation. Kitna time? 10 to 12 hours. So complete this. Now, ovulation hua, that means primary oocyte got converted into secondary oocyte and corpus luteum is formed. Ovulation का मतलब है कि primary oocyte is getting converted into secondary oocyte and corpus luteum is being formed. तो corpus luteum बन गया. I am going to make corpus luteum with orange in color. अब क्या होगा? ये corpus luteum धीरे धीरे, because corpus luteum की growth and maintenance depend करती है हार्मोन LH पे. तो जैसे जैसे हार्मोन LH बढ़ेगा वैसे वैसे कॉर्पस लूटियम की ग्रोथ बढ़ेगी. Right? Now my next question to you is, when is the size of corpus luteum maximum? Corpus luteum का maximum size कब मिलेगा? Corpus luteum का maximum size मिलेगा 8 days after ovulation. 8 days after ovulation का मतलब है 14 plus 8, that is day 22 of the cycle. Clear? So now, again go to your questions and write down the next question. So your next question is, corpus luteum is formed due to which hormone? Which hormone is forming corpus luteum? So corpus luteum is being formed due to ovulation, and ovulation is happening due to hormone LH. So your answer to this question will be LH. Right? Next question. In a non-pregnant female, corpus luteum is maintained by. In a non-pregnant female, corpus luteum is maintained by which hormone? Same answer. The hormone which is maintaining corpus luteum is LH in a non-pregnant female. But यही question अगर ऐसे आए, in a pregnant female, corpus luteum is maintained by. अब बताओ, प्रेग्नेंट फीमेल में कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम को? Now you are not going to say LH. Now the answer is going to change and it becomes HCG. This is the reason why we say that hormone LH and HCG are functionally similar. They are functionally similar, right? Because the hormone which maintains, Akshay, it is not progesterone, it is HCG. Not progesterone, गलत बोल रहे हो. जितने लोग progesterone mark कर रहे हैं, please इसको correct करो. It is not progesterone, it is HCG which maintains corpus luteum in pregnancy, right? And that is why we say LH and HCG are functionally similar. दोनों का function similar होता है, right? Clear to all of you? Now, continue writing questions. Next question. Maximum size of corpus luteum is seen at. So when is the maximum size of corpus luteum seen at? It is seen at
8 days after ovulation. तो या तो ऑप्शन में 8 days after ovulation लिखा होगा, or you can say day 22 of the cycle. Next question. What are the hormones which are formed by corpus luteum? So the hormones which are formed by corpus luteum, mainly it forms progesterone, but then it also forms estrogen and inhibin A. Remember कि कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी ये एक और हार्मोन बनाता है एंड दैट इज रिलैक्सिन. सो एक एक्स्ट्रा हार्मोन बनता है इन प्रेगनेंसी बाय कॉर्पस लूटियम एंड दैट इज रिलैक्सिन. नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में 3 हार्मोन्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स में कॉर्पस लूटियम फॉर्म्स 4 हार्मोन्स. राइट नाउ थोड़ा सा अप्लाइड पढ़ते हैं. आई एम टेलिंग यू कि कॉर्पस लूटियम का मैक्सिमम साइज 8 डेज पे होता है एंड 8 डेज पे ही इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है. मैक्सिमम एक्टिविटी. तो अगर कोई हमसे मैक्सिमम साइज पूछे तो भी 8 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, एंड कोई हमसे पूछे कि व्हेन इज मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ कॉर्पस लूटियम सीन, देन आल्सो 8 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन. राइट. सो अगर कॉर्पस लूटियम की मैक्सिमम एक्टिविटी 8 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन हो रही है, सो अगर आपके क्वेश्चन में आता है व्हेन आर द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो व्हाट विल योर आंसर बी? सो योर क्वेश्चन इज maximum levels of progesterone are seen at. So maximum levels तब मिलेंगे जब कॉर्पस लूटियम की मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, एंड कॉर्पस लूटियम की मैक्सिमम एक्टिविटी होती है एट डे 22 ऑफ द साइकिल. यस. अब यही क्वेश्चन को एक और अप्लाइड फॉर्म में पढ़ो. जब भी एक इनफर्टाइल पेशेंट हमारे पास आती है एंड हमें ये चेक करना है कि उस फीमेल ने ओव्यूलेट किया कि नहीं किया. राइट. तो ओव्यूलेट किया कि नहीं किया हम पता लगाते हैं बाय प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि अगर फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है तो उसने ओव्यूलेट किया, क्योंकि तब कॉर्पस लूटियम बना. एंड अगर फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन नहीं प्रेजेंट है तो दैट मींस उसने ओव्यूलेट नहीं किया. सो इफ आई आस्क यू दैट आई वांट टू डू द टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू द टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन? सो सिंस टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन जो हम करते हैं उसमें हम देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन बना कि नहीं बना, एंड प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम होता है डे 22 पे, तो जितने भी टेस्ट ऑफ ओव्यूलेशन होते हैं दे आर ऑल डन ऑन डे 22 ऑफ द साइकिल. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द टेस्ट्स टू नो whether a female has menstruated or not. Sorry, whether a female has ovulated or not, they will be done on day 22 of the cycle. Right? So यही क्वेश्चन 3 फॉर्मेट में पूछा जाता है. When is the size of corpus luteum maximum? Day 22. When are the levels of progesterone maximum? Day 22. When are you going to do the test for ovulation? Day 22. Clear to all of you? So अब वापस अपने डायग्राम पे जाओ और कॉर्पस लूटियम जो मैक्सिमम साइज का हो गया है उसमें से प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराओ.
So now corpus luteum has formed progesterone. What will this progesterone do? This progesterone will have two functions. Number one, it will support the endometrium. It will support the endometrium, right? And number two, it will decrease LH. It will have a negative feedback on LH. सलमान, ऐसा नहीं होता कि डे का कोई भी क्वेश्चन डे 22 ही लगाना है, कभी भी रट्टे नहीं मारने होते हमें. That is why I am telling you in detail. इस क्वेश्चन का आंसर डे 22 है, right? So what has progesterone done? Progesterone has supported the endometrium and progesterone has decreased LH. Now, because progesterone has decreased LH and corpus luteum was dependent on LH, तो जब LH के levels कम होंगे तो corpus luteum धीरे धीरे it will start dying, right? And when corpus luteum will die, what is going to happen? There will be decreased progesterone, and because there will be decreased progesterone, progesterone का जो support था endometrium पे, that will be lost. So support to endometrium is lost, and because support to endometrium is lost, day 28 पे the entire endometrium will shed. In other words, the female will menstruate. Right? Not only will progesterone decrease, estrogen and inhibin will decrease, जिसकी वजह से FSH will increase. And जब FSH increase होगा तो वापस से cycle start हो जाएगी. So the cycle started with increased FSH, and again we are back at increased FSH. So have you understood? All those who were not understanding menstrual cycle, now have you understood menstrual cycle? Chat box में quickly show me a thumbs up if you've understood menstrual cycle. Show me a yes or a no. Have you understood? Okay. Great. Fine. Now, continue your questions. Ab questions से पहले. Now, if you have understood menstrual cycle, अब देखो अपने diagram को फिर से. Look at your diagram again. Now tell me, corpus luteum कब बना था? On which day was corpus luteum formed? Corpus luteum was formed on day 14, right? And day 28 पे menstruation हो गया, right? So if I ask you कि what is the lifespan of corpus luteum in a non-pregnant female? Day 14 पे corpus luteum बना and day 28 पे तो shed हो भी गया, corpus luteum degenerate भी हो गया and endometrium भी shed हो गई. So if I ask you what is the lifespan of corpus luteum in a non-pregnant female, the lifespan of corpus luteum in a non-pregnant female
is 10 to 12 days, क्योंकि 14th डे पे तो मेंस्ट्रुएशन ही हो जाता है, राइट? So it is around 10 to 12 days. Now, what is the lifespan of corpus luteum in a pregnant female? Lifespan of corpus luteum in a pregnant female. It is around 8 weeks. So lifespan of corpus luteum in a non-pregnant female is 10 to 12 days. In pregnancy, it is better answer is 8. Range will be 8 to 10 weeks. Clear? So if you have understood menstruation, you will understand that a female will menstruate. Now stop typing and listen. This is a very, very important concept. Now, a female is going to menstruate. Why does a female menstruate? Because initially उसकी body में levels of progesterone high थे, जो कि endometrium को support कर रहे थे, and all of a sudden the levels decrease, जिसकी वजह से support चला जाता है and a female menstruates. Right? This is why menstruation is happening. This इतना मालूम है, ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ के इतना समझ लिया कि इनिशियली लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन हाई होते हैं, जो कि एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करते हैं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, जिसकी वजह से एक फीमेल मेंस्ट्रुएट करती है. सो सपोज आप अपने हेल्थ केयर सेंटर पे हो एंड वहां पे एक फीमेल आके कहती है कि डॉक्टर आई हैव अ वेडिंग कमिंग, किसी मेरी फ्रेंड की शादी है या कोई फैमिली फंक्शन है, और आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन एंड उस टाइम पे आई एम एक्सपेक्टिंग माय पीरियड्स, सो प्लीज गिव मी सम ड्रग ताकि मेरा पीरियड पोस्टपोन हो जाए. सो यू ऑल्सो नो दिस कि अगर इस फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा एंड प्रोजेस्टेरोन लो नहीं होगा तो फीमेल मेंस्ट्रुएट नहीं करेगी. सो दिस मीन्स कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? दिस मीन्स ऐसी सिचुएशन में वी आर गोइंग टू टेल हर दैट 3 to 4 days बिफोर हर मेंस्ट्रुएशन वो प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स खाए. जब तक का उसको पीरियड्स नहीं चाहिए तब तक वो प्रोजेस्टेरोन खाती रहे. जब तक वो प्रोजेस्टेरोन खाएगी उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स विल बी हाई. Once the pilgrimage is over, once the family function is over, she can stop taking progesterone. जब वो progesterone खाना बंद करेगी, the levels of progesterone will decrease and a female will menstruate. Yes? Now tell me, अगर ये सब समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि in pregnancy फीमेल को menstruation क्यों नहीं होता है. Why in pregnancy there is amenorrhea? In pregnancy there is amenorrhea because in initial part of the pregnancy, corpus luteum will form progesterone, right? And later on, placenta will form progesterone. So throughout pregnancy, the levels of progesterone are high. And because throughout 9 months the levels of progesterone are high, that is why they keep on supporting the endometrium, and that is why menstruation doesn't happen. Are you understanding? So amenorrhea का reason during pregnancy is high level of progesterone. ये progesterone कौन बनाता है? Initially corpus luteum बनाता है, बाद में placenta बनाता है. Now all of you know that pregnant endometrium is called as decidua, right? अब जब female deliver करेगी तो प्रोजेस्टेरोन प्लासेंटा आउट हो जाएगा बॉडी से, प्लासेंटा भी डिलीवर हो जाएगा. जब प्लासेंटा डिलीवर होगा
तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल उस फीमेल में डिक्रीज होगा, एंड बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज होगा, तो अब क्या होगा, जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम थी, जो कि डेसिडुआ थी, इट विल बी शेड आफ्टर डिलीवरी, and this shedding of decidua after delivery is called as lochia, right? So lochia is nothing but shedding of endometrium after delivery. So now I want you to write a few important points. First important point is, for menstruation to occur, what is needed? Which hormone is needed? Progesterone is needed. Initially, the levels of progesterone should be high, and then they should suddenly decrease. Then menstruation will happen, right? Next important point is, if there is a female in which there is no ovulation, no ovulation means an ovulation, ऐसी females में there will be decreased progesterone या no progesterone. तो अगर प्रोजेस्ट्रॉन शुरू से ही कम है या प्रोजेस्ट्रॉन है ही नहीं, कैन अ फीमेल मेंस्ट्रुएट? नो. Menstruation के लिए it is necessary that initially the levels of progesterone should be high and then they have to decrease, right? So ऐसी females में there is amenorrhea. अगर प्रोजेस्ट्रॉन कंटिन्यूअसली हाई है तब भी पीरियड नहीं होगा, और अगर प्रोजेस्ट्रॉन शुरू से ही लो है तब भी पीरियड नहीं होगा. For menstruation to happen, initially the levels should be high and then they should suddenly drop. I hope all of you are understanding this. Yes? Okay, next question. In pregnancy, the levels of progesterone are continuously high. And because levels of progesterone are continuously high, again female will have amenorrhea. This amenorrhea is secondary amenorrhea. Why secondary amenorrhea? क्योंकि पहले menstruate कर रही थी, अब menstruate नहीं कर रही है. Right? This is clear to all of you? Yes? Now I am just asking you one more clinical situation and then we will talk more about menstrual cycle. Suppose आप अपनी ओपीडी में बैठे हो and एक पेशेंट आके आपको कहती है, एक फीमेल आके कहती है कि डॉक्टर माय पीरियड्स वर ड्यू अराउंड 4 days बैक, बट मेरे को अभी तक पीरियड आया नहीं है. तो अगर कभी भी एक फीमेल आपको ये कहे कि उसको एमेनोरिया हो रहा है, पीरियड नहीं आया है, in all such patients you have to rule out pregnancy. So in all patients of secondary amenorrhea, जिनको पहले menstruation होता था and अचानक से अब नहीं आया है, you should do a urine pregnancy test and you should rule out pregnancy. So what I'm going to do is, I am going to rule out pregnancy in her. I'm going to do a urine pregnancy test. मान लो पेशेंट का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन अभी तक 4-5 दिन हो गए हैं and patient hasn't had her periods. So now I also know this, that if I decrease the levels of progesterone suddenly in her body, she will menstruate.
Because if the levels of progesterone are suddenly decreased, the support to the endometrium would be lost. But there is no drug जो कि ऐसे suddenly decrease कर दे progesterone के levels को. So what I am going to do is, I am going to tell her, okay, you take this tablet, and tablet क्या दूंगी? Progesterone. Meprate 10 mg BD. I am going to tell her कि take progesterone for 5 to 6 days. तो मैं, and I am going to tell her also this कि जब 5 to 6 days तक आप ये टैबलेट खा रहे हो, तब तक का पीरियड नहीं आएगा, तो डॉक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है. So for 5 to 6 days I will give her progesterone. तो जब मैं उसको 5 to 6 days के लिए प्रोजेस्ट्रॉन दूंगी, तो उसकी बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स हाई होंगे. And after 5 days I will tell her stop taking progesterone. After 5 days, जब आपकी patient will stop taking progesterone, the levels of progesterone will suddenly decrease and she will menstruate. Are you understanding this? This is called as progesterone withdrawal. कि आपने progesterone दिया patient को 5 to 6 days के लिए, ऐसी patient जिसको periods नहीं आ रहे थे, and then उसके बाद suddenly stop कर दिया. When you suddenly stop it, the levels of progesterone will suddenly decrease and it will lead to menstruation. So bottom line ये है कि menstruation से related anything and everything के लिए we are dependent on progesterone. Period delay करना है तो भी progesterone. Period लाना है तो भी progesterone. So the most important hormone which is needed for menstruation is progesterone. And initially the levels of progesterone should be high, and then they should suddenly decrease. Then your patient will menstruate. Have you understood this? Itna samajh mein aa gaya, all of you? Quickly in the chat box tell me yes or no. सलीम, अगर दे भी दिया आपने प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रेगनेंसी में तो प्रोजेस्ट्रॉन इज वेरी गुड, राइट? प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प्स टू मेंटेन प्रेगनेंसी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. रोल ऑफ हार्मोन रिलैक्सेंट. सो प्रेगनेंसी में यू नीड many smooth muscle relaxants ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ना करे, राइट? इसीलिए रिलैक्सेंट निकलता है. रिलैक्सेंट इज आल्सो अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट. इट मीन आई कैन सी योर यस, दैट मींस ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्विकली बताओ. एंड ये दोनों में केसेस आ सकता है. ये नर्सिंग स्टूडेंट से भी पूछा जा सकता है, ये फॉरेन मेडिकल डॉक्टर्स से भी पूछा जा सकता है कि सपोज यू हैव अ फीमेल who has come to you with complaint of excessive bleeding, which is called as atypical uterine bleeding, right? Excessive bleeding, that is atypical uterine bleeding. So now tell me, based on the concepts which I have taught you, कि अगर एक फीमेल को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है एंड मुझे उसकी ब्लीडिंग को इमीडिएटली स्टॉप करना है, which hormone can I give her? Now this is a layman thing कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है. हमें पता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि एक्सेसिव एंडोमेट्रियम शेड कर रही है. तो आई ऑल्सो नो दिस कि अगर इस पेशेंट को मैंने प्रोजेस्ट्रॉन दे दिया, प्रोजेस्ट्रॉन उसकी बॉडी में जाएगा एंड एंडोमेट्रियम को सपोर्ट कर देगा, एंडोमेट्रियम की शेडिंग रुक जाएगी एंड ब्लीडिंग कम हो जाएगी, राइट? सो इफ अ पेशेंट कम्स टू यू विद एक्सेसिव ब्लीडिंग, एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग, नंबर 1 यू कैन गिव देम प्रोजेस्ट्रॉन. ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है, यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ पिल्स,
You can give it in the form of IUCD, progesterone IUCD, called as Mirena. Number 2, you can give estrogen plus progesterone, that is oral combined pill. And number 3, you can give a drug which is non-hormonal, जो कि किसी भी टाइप की ब्लीडिंग में यूज होता है. कोई मेल आपके पास आ जाए एक्सेसिव ब्लीडिंग करके, किसी की नोज से ब्लीडिंग हो रही हो, किसी भी टाइप की ब्लीडिंग के लिए दिस इज यूज्ड, एंड दैट इज tranexamic acid. So the 3 drugs which you can use in all females who come to you with atypical uterine bleeding, they are progesterone, estrogen plus progesterone, that is oral combined pills, and tranexamic acid. Now, this one concept which I'm going to teach now for just 2 minutes, this is for the foreign medical graduates, right? अगर आपसे पूछा जाए which drug are you going to prefer, progesterone या oral combined pill या tranexamic acid, your answer will be oral combined pills. Why? Because although progesterone is the hormone which is needed for menstruation, progesterone is the hormone which is going to support the endometrium, progesterone can act only on endometrium which has been primed by estrogen. Progesterone can act only on endometrium जिसकी priming estrogen कर चुका है. So when a patient is having excessive bleeding, I don't know कि patient की body में estrogen कितना है. So better is कि I give estrogen and progesterone, right? So the best drug out of this is estrogen plus progesterone, that is oral combined pill. Clear to all of you? Yes? Okay. Coming to the next concept and the next question. My next question is, I was telling you that in menstruation, and this is for all of you, सबसे पूछा जाता है ये question. Menstruation means shedding of endometrium. Now, endometrium की layers होती हैं. एंडोमेट्रियम में एक सुपरफिशियल लेयर होती है एंड अ डीप लेयर. Deep layer is called as zona basalis. Karishma, ethamsalate can be given, but that's not a very good drug. Studies have shown that tranexamic acid is a much better drug. Ethamsalate बहुत कम cases में indicated होती है. So पहले हम बहुत use करते थे ethamsalate, अब हम tranexamic acid ही use करते हैं, right? So when menstruation occurs, it is the superficial layer which is shed. Superficial layer is shed during menstruation. So if superficial layer is shed during menstruation, तो जब हम ये कहते हैं कि ईस्ट्रोजन आता है एंड ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करता है, कौन सी एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करेगा? इट इज गोइंग टू प्रोलिफरेट जोना बेसालिस. मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे सुपरफिशियल लेयर शेड हो गई, जोना बेसालिस रह गई. अब नेक्स्ट टाइम जब एफएसएच आएगा एंड एफएसएच ईस्ट्रोजन बनाएगा एंड ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा, तो जोना बेसालिस को प्रोलिफरेट कराएगा. जोना बेसालिस फिर से सुपरफिशियल लेयर बनाएगी एंड देन सुपरफिशियल लेयर अगेन विल बी शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. अगेन जो जोना बेसालिस है नेक्स्ट साइकिल में सुपरफिशियल लेयर बनाएगी.
right? And again, superficial layer will be shed off. So there are two questions which they ask you here. Which layer is shed off? The answer is easy. It is the superficial layer. But if they ask you which layer of endometrium is responsible for regeneration of endometrium in the next cycle, it is zona basalis. So this is the layer of endometrium which is responsible for regeneration of entire endometrium in next cycle. Very, very important questions, both of them. Clear to all of you? Yes? Now, next question. For next question, I want you to draw this cycle, first day of the cycle, 28th day of the cycle, and ovulation, which will happen on day 14. Right? So if this you have copied this slide, I am moving to the next slide now. And you are going to draw this line diagram again. First cycle, day 14 and day 28. Right? Now, in the first half of menstrual cycle, follicle था and follicle धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, and follicle was releasing hormone estrogen from the granulosa cells. Estrogen निकल रहा था, right? And estrogen क्या कर रहा था? Estrogen was acting on the uterus and endometrium of the uterus, and it was proliferating it. So if I ask you, which is the main hormone in first half of cycle, your answer will be estrogen. Clear? Now, because first half of the cycle में जो भी हो रहा है वो follicle को हो रहा है. धीरे पहले सारे follicles stimulate हो रहे हैं, फिर all of them are dying except one follicle, right? And then one follicle is growing. So whatever is happening to the follicle. That is why first half of the cycle is called as follicular phase. And because in first half of the cycle, the main hormone is estrogen, and estrogen is causing proliferation of the endometrium. So the first half is also called as proliferative phase. Clear? अब second half में क्या हो रहा था? Second half में ovulation की वजह से corpus luteum was formed, and it was the corpus luteum which was initially increasing in size, and then it was decreasing in size. The main hormone was progesterone, and progesterone supports the endometrium, which is called as secretory action. So if I ask you, which is the main hormone during second half of cycle, your answer will be progesterone. And because in second half, whatever is happening to the corpus luteum,
So second half is called as luteal phase. And because second half में मेन हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन है जो कि एंडोमेट्रियम में सिक्रीटरी एक्शन कॉज कर रहा है, so second half is also called as secretory phase. Clear? So now there are 3-4 things again which you have to remember because many questions are asked on this part. Clear? It's clear to all of you? Yes? Now, remember the duration of luteal phase of the cycle. The duration of luteal phase of the cycle is fixed and it is 14 days. So I'll tell you again, someone has asked me to repeat. Quickly, I will repeat. First half of the cycle में main hormone is estrogen and जो भी हो रहा है, it is happening to the follicle in the first half. So first half को कहते हैं follicular phase. And because main hormone is estrogen and estrogen brings about proliferative action on the endometrium, so first half को proliferative phase भी कहते हैं. अब day 14 पे ovulation होता है, corpus luteum बनता है, and अब जो भी होगा वो corpus luteum को होगा. पहले corpus luteum बढ़ेगा till day 22, then corpus luteum short होगा, right? So whatever is happening in second half is happening to the corpus luteum. So second half is also called as luteal phase. And second half में जो main hormone होता है, that is progesterone. And progesterone supports the endometrium, which is called as secretory endometrium. So second half को luteal phase या secondary phase भी कहते हैं. Now the important thing which you have to remember is that the duration of luteal phase of the cycle is fixed and it is 14 days. The duration of follicular phase can vary. Right? So suppose, now I'm giving you a question. Suppose there is a female जिसका period आया 1st of March को. इस फीमेल की 30 डे की साइकिल है. So that means उसको जो नेक्स्ट पीरियड आएगा that will be on 30th of March. हमेशा याद रखना कि day 1 of the cycle is the day a female starts having menstruation. जिस दिन bleeding start होती है, that is the first day of the cycle. So if there is a female जिसको first day जो bleeding आई वो 1st March को आई and इस फीमेल की साइकिल की लेंथ 30 डेज है, सो इसको जो नेक्स्ट पीरियड आना है वो 30th मार्च को आना है. एंड ये पेशेंट हमारे पास आके कहती है कि डॉक्टर प्लीज टेल मी व्हेन एम आई गोइंग टू ओव्यूलेट, राइट? सो 1st मार्च 30th मार्च. तो अगर मैंने उसको कहा कि यू आर गोइंग टू ओव्यूलेट ऑन 14th मार्च, suppose if I tell this to her, so if I say this to her, इसका मतलब कि जो luteal phase मैंने बना दिया that will be 30 minus 14 days and that is 16 days. इस फीमेल में luteal phase हो गया 16 days and follicular phase हो गया 14 days, which cannot happen, right? हमेशा luteal phase 14 days का होना चाहिए. Follicular phase can vary. So what I'm going to do is from 30th March, I will count 14 days backwards. 13th March से जब आप 14 days backward count करते हो तो आता है 16th March. So आप जब भी आपने ओव्यूलेशन की डे कैलकुलेट करना है,
From the next menstrual cycle, you have to count 14 days back. And that is how the question will be asked. Right? So, write this. Ovulation occurs 14 days prior to the next menstrual cycle. To the next menstrual cycle. Right? क्वेश्चन में आएगा द डे ऑफ ओव्यूलेशन. अगर डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज फ्रॉम द लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल you will subtract 14 and you will get the day of ovulation. Many times this question has been asked in all entrance exams. So example, अगर इस किसी फीमेल की menstrual cycle is 40 days, किसी फीमेल की menstrual cycle 40 days की है, and I ask you कि tell me when will she ovulate. तो ovulation कब होगा? 40 minus 14, right? 40 में से 14 माइनस करोगे, that is day 26 of the cycle. So from the length of menstrual cycle, you will subtract 14 and you will get the day of ovulation. Very, very important question. Clear? Next question. There are some females who have pain in abdomen at the time of ovulation. This is called as Michel-Merz syndrome. Michel-Merz syndrome. So there are some females who will have pain in abdomen at the time of ovulation. This is called as Michel-Merz syndrome. So in Michel-Merz syndrome, a female complains of cyclical pain in abdomen every month. And ये जो cyclical pain होगा, this will be in the mid cycle. So there will be cyclical pain in abdomen every month. And ये pain होगा in the mid cycle, because this pain will happen at the time of ovulation. And this is what is called as Michel-Merz syndrome. Clear? Now, let me ask you one more question, which is just application-based question. Let me see how many of you can answer it. So my question to you is, yes, pain is happening at the time of ovulation. And this is what is called as Michel-Merz syndrome. Nothing. You simply have to give NSAIDs. Nothing else. अगर cycle 26 days की है, अगर cycle 28 days की है तो 28 minus 14, that is day 14. ये तो बहुत easy है. And हम आज तक यही तो पढ़ते आए हैं कि 28 day की cycle में day 14 पे ovulation होता है. Right? Okay. Now suppose you have a female who complains of recurrent abortions. All the FMGE graduates, I want answer from you for this question. So there is a female
who is complaining of recurrent abortion, and इस फीमेल में प्रॉब्लम है luteal phase defect. Luteal phase defect. What do you think will be the drug of choice? Luteal phase defect है. What do you think will be the drug of choice? हमें कुछ नहीं पता luteal phase defect के बारे में, लेकिन हमें ये मालूम है कि luteal phase क्या होता है. Luteal phase is second half of the cycle, right? And luteal phase में what is the hormone? Progesterone. So if there is luteal phase defect, that means there is a defect in formation of progesterone. So हम drug of choice क्या होगी? Progesterone. Very good. Clear? Now, just one more concept. And this concept is LH hormone has three important functions. LH hormone has three important functions. Number one, it is needed for ovulation. Right? LH surge is needed for ovulation. So it has four important functions. Sorry. It has four important functions. Number two, it is needed for arrest of mitosis 1. Arrest of mitosis 1 is over due to LH. So it is needed for ovulation, and arrest of mitosis 1 is again over due to the hormone LH. Third thing, it is needed for maintenance of corpus luteum in non-pregnant females. It is needed for maintenance of corpus luteum in non-pregnant females. Right? Yahan tak to we've done. Now comes the fourth function. Fourth function is LH acts on theca cells of the ovary, and from theca cells it will release androgens. Androgens are male hormones. So ovary जो है वो केवल फीमेल हॉर्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करती है. ओवरी, मैम LH कब होता है? व्हाट इज दिस क्वेश्चन? LH कब होता है? सेकेंड पॉइंट इज नॉट क्लियर. अरे हमने सेकेंड पॉइंट यही तो पढ़ा था कि माइटोसिस 1 का अरेस्ट कब ओवर होता है? माइटोसिस 1 का अरेस्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. राइट? माइटोसिस 1 का अरेस्ट होता है ओवर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. एंड क्यों ओवर होता है? ड्यू टू हार्मोन LH. ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही कराया था. ये देखो, at puberty, HPO axis gets mature, LH is released, primary oocyte will get converted into secondary oocyte, arrest is over. Right? So it is needed for, acha, okay, I have understood because I have written galti se mitosis. You are right. It is meiosis. So arrest of, that was my mistake. Arrest of meiosis 1 is over due to LH. Then now fourth point which I am telling you, LH acts on the theca cells of the ovary, and from theca cells of the ovary it will release male androgens. Now these androgens
which are formed in females. These androgens in adipose tissue due to enzyme aromatase, they will get converted into estrogen. And which estrogen? E1, esterone. Clear? So, LH acts on the theca cells of the ovary, and her female में from puberty onwards androgens will be formed, right? And so ovary जो है androgens भी बनाता है हर female में after puberty, and जितने androgen बनते हैं females में, they go in the adipose tissue and they get converted into estrogen with the help of enzyme aromatase. Clear? All these points clear to all of you? Just one or two more points. So just now I was telling you that if there is no ovulation, there is no progesterone. And if there is no progesterone, I told you that there will be amenorrhea. ये तो मैंने अभी बताया था कि ओव्यूलेशन नहीं है तो प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है, राइट? बिकॉज ओव्यूलेशन नहीं है तो कॉर्पस लूटियम नहीं है, एंड कॉर्पस लूटियम नहीं है तो प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है, एंड प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है तो एमेनोरिया होगा. करिश्मा, ग्रैन्युलोसा सेल तो पूरा का पूरा ईस्ट्रोजन बना रहे थे. अभी तक हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? अभी तक यही तो पढ़ते आ रहे थे कि FSH will act on granulosa cells. From granulosa cells, it will release estrogen and inhibin B. सो गए क्या? बीच में पानी पियो. Okay. So if there is no progesterone, there will be amenorrhea. Akshay, forget right about primary and secondary. प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पहले फीमेल मेंस्ट्रुएट कर रही थी कि नहीं कर रही थी. अगर पहले कर रही थी एंड तब एमेनोरिया हुआ तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी, राइट? एंड अगर पहले नहीं कर रही थी देन दैट इज प्राइमरी एमेनोरिया. सो एमेनोरिया की बात कर रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बाद में बात करेंगे, राइट? इट्स ओके करिश्मा, राइट? सो अभी हम केवल एमेनोरिया की बात करें. प्राइमरी सेकेंडरी भूल जाओ, अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी की क्लास बाद में होगी. अभी जस्ट टॉक अबाउट एमेनोरिया. सो दिस मीन्स कि अगर ओव्यूलेशन नहीं है तो प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है, एंड प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है तो पीरियड नहीं है, यानी कि एमेनोरिया है. सो बट देन सो मेनी टाइम्स हम ये कहते हैं कि द साइकिल्स आर एनओव्यूलेटरी. एक फीमेल जब मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट करती है प्यूबर्टी में, द साइकिल्स आर एनओव्यूलेटरी, राइट? जब मेनोपॉज का टाइम आता है तो साइकिल्स आर एनओव्यूलेटरी. एंड अभी आई एम टेलिंग यू कि ओव्यूलेशन नहीं है तो पीरियड नहीं है. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो नाउ अंडरस्टैंड. सपोज देयर इज अ फीमेल जिसको पीरियड आना था 20th मार्च को, राइट? एंड इस फीमेल को ओव्यूलेशन होना था 20-14, दैट इज 6th मार्च को. 6th मार्च को इस फीमेल को ओव्यूलेशन होना था, 6th मार्च को ये ओव्यूलेट नहीं करी, राइट? एंड अगर वो ओव्यूलेट नहीं करी तो उसके बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है, कॉर्पस लूटियम नहीं है. एंड अगर प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है तो 20th मार्च को जो पीरियड आना था अब वो उसकी बॉडी में नहीं, अब वो नहीं आएगा. 20th मार्च को मेंस्ट्रुएशन विल नॉट हैपन बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज ओव्यूलेट नहीं करी, राइट? सो एमेनोरिया हो गया. अब ये फीमेल वेट कर रही है कि शायद 22nd तक आ जाए, 25th तक आ जाए, 30th तक आ जाए, पीरियड नहीं आया. ओव्यूलेशन नहीं है तो पीरियड नहीं है.
She is waiting till in April also कि अब आ जाए, अब आ जाए. But because progesterone नहीं है, तो period नहीं होगा. But in the meanwhile, in her body, कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है? Estrogen. Estrogen is present. And estrogen क्या करता है? एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट कराता है. तो ब्रिक्स की तरह लगाता जाता है एंडोमेट्रियम को, राइट? अब इन ब्रिक्स को सपोर्ट करने वाला सीमेंट नहीं है, और ईस्ट्रोजन जो है वो ब्रिक पे ब्रिक लगाए जा रहा है. तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक दिन ये पूरी की पूरी वॉल गिर जाएगी, राइट? सो व्हाट विल हैपन? दिस estrogen which is present in the body, it will proliferate the endometrium. This endometrium is not supported by progesterone. So this endometrium is weak. And ultimately, one day it is going to shed. Ultimately, it sheds. This is called as estrogen breakthrough bleeding. Estrogen breakthrough bleeding, right? ये bleeding period वाले दिन पे नहीं होगी, ये कभी भी हो सकती है, 10 डेज के बाद आफ्टर पीरियड्स. तो ये अगर 20th मार्च को पीरियड आना था, ये कभी भी हो सकती है, 4th अप्रैल, 10th अप्रैल, हो सकता है अप्रैल में ना हो, मई में जा करो, राइट? दैट इज व्हाई. लेकिन जब ये पेशेंट ब्लीडिंग करके आएगी, ये क्या कहेगी? ये कहेगी डॉक्टर मेरा पीरियड तो 20th मार्च को आना था, लेकिन मेरा पीरियड बहुत इरेगुलर है, कभी ये मई में आता है, कभी ये अप्रैल में आता है, राइट? पेशेंट ये थोड़ा ना आके कहेगी कि हमें ईस्ट्रोजन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है. पेशेंट ये कहेगी कि 20th मार्च को पीरियड आना था, 20th मार्च को पीरियड नहीं आया है, पीरियड कभी अप्रैल में आ रहा है, कभी मई में आ रहा है. दैट इज व्हाई वी से दैट एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स आर irregular. Number one. Number two, there will be excessive bleeding, क्योंकि there will be the entire proliferated, पूरी की पूरी proliferated endometrium गिरेगी, right? So there will be excessive bleeding, and ovulatory cycles are irregular, right? अब normal menstrual cycle में pain क्यों हो रहा था? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन हो रहा था बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन का विड्रॉल हो रहा था. नॉर्मली पेन अकर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. आई हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर ऑल्सो. पेन क्यों हो रहा था? इट हैपेंस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बिकॉज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज, एंड जब लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज करते हैं तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से PGF2 अल्फा इज रिलीज्ड, एंड ये PGF2 अल्फा पेन कराता है, राइट? तो नॉर्मली पेन होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है. अब एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स में प्रोजेस्टेरॉन से कोई रिलेशन नहीं है. एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स में ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि ईस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा है. दैट इज व्हाई एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स आर पेनलेस. क्लियर? सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स. एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स में ब्लीडिंग हैपेंस नॉट ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल. And ovulatory cycles में bleeding happens due to excessive estrogen. These cycles are irregular, there is excessive bleeding, and these cycles are painless. Clear to all of you?
Any confusions here? Okay. So this completes our discussion on menstrual cycle. Now you also have to know AUB, atypical uterine bleeding. Atypical uterine bleeding को जानने से पहले characteristics of menstrual cycle जानना जरूरी है. Now, if you people are following the English app edition 1 of Nursing Next Life, जिसमें मैंने AUB पे लेक्चर लिया है, characteristics of menstrual cycle पे लिया है, you are not going to follow it. आज जो मैं पढ़ा रही हूं AUB में, because guidelines change हो गई हैं. अब हमारी national guidelines आई हैं, जो कि characteristic of menstrual cycle बता रही हैं. So please, आज जो मैं लेक्चर में बता रही हूं, you are going to follow this. All the nursing next students. You are not going to follow what I have taught earlier. Yes? You are going to follow what I'm telling you now. So I want all of you, treatment of anovulatory cycles. Progesterone दे दो. भाई anovulation में progesterone नहीं है. गायनी में it is 2+2. जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल लो. प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो ट्रीटमेंट इज प्रोजेस्टेरॉन दे दो. All the foreign medical graduates, you are also going to follow this. You are not going to follow Marrow edition 5 में the characteristics which I have told you. All the nursing students, you are also going to follow this. These are our new updated national guidelines on AUB. तो हमें ये follow करना है. So number 1 is frequency of menses. पहले हम कहते थे 21 to 35 days. वो 21 to 35 days अब चला गया है. अब कुछ भी नहीं है 21 to 35 days. Now we say that the normal length, frequency of cycle का मतलब length of the cycle. So now the length of the cycle is 24 to 38 days. If the length of the cycle is less than 24 days, earlier हम इसको कहते थे polymenorrhea, right? अब हम polymenorrhea, oligomenorrhea, menorrhagia नहीं यूज करते terms. अब instead of polymenorrhea, you are going to say frequent cycles. Frequent cycles. Then, if the length of the cycle is more than 38 days, पहले more days के लिए कहते थे ओलिगोमेनोरिया. अब कहते हैं infrequent cycles. So now we say that the length of the cycle will be between 24 to 38 days. If it is less than 24 days, they are called as frequent cycles. If length is more than 38 days, infrequent cycles. Akshay, you don't have to thank me for keeping you updated. That is my job. If I keep on repeating the older things and I do not keep you updated, then I have failed in my job, right? So जितना तुम लोग पढ़ते हो उतना ही हमें भी पढ़ना होता है, because at least you know this कि you have to study from one place. We have to daily read so much कि कहीं कोई नई अपडेट तो नहीं आ गई जो कि मिस हो जाए before in my class, right? So this is my job. You have to do your job. You have to study properly. जो मैं बता रही हूँ उसको याद करना है. And I will do my job. I will keep updating you people. Then, now there is one term which is being used by our national government, and that is
रेगुलरिटी, साइकिल्स रेगुलर है कि नहीं है, राइट। एंड साइकिल्स रेगुलर के लिए नाउ दे से कि जो साइकिल टू साइकिल वेरिएशन नॉर्मल इज 2 to 20 days. सो साइकिल टू साइकिल वेरिएशन एक फीमेल में 2 to 20 days का हो सकता है. आई विल एक्सप्लेन यू दिस जस्ट नाउ. अगर किसी फीमेल में देयर इज नो ब्लीडिंग, इट विल बी कॉल्ड एज एमेनोरिया. अगर साइकिल का वेरिएशन 2 to 20 days है तो साइकिल्स आर रेगुलर. अगर वेरिएशन मोर देन 20 days है देन इररेगुलर. इररेगुलर. तो साइकिल टू साइकिल वेरिएशन is 2 to 20 days. तो तुम में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे इफ आई आस्क यू आर योर साइकिल्स रेगुलर, यू पीपल से नहीं मैम, कभी 2 दिन पहले आती है, कभी 3 दिन बाद आती है. 2 to 20 days का अगर वेरिएशन है दैट इज नॉर्मल वेरिएशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो स्टॉप सेइंग, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ये मैं किसी पेशेंट से भी पूछू ना कि तुम्हारी साइकिल्स रेगुलर है, पेशेंट क्या कहेगा? नहीं नहीं मैम, कभी 3 दिन पहले आती है, कभी 4 दिन बाद में आती है. 2 to 20 days is a normal variation. If the variation is more than 20 days, then only say that your cycles are irregular. Are you understanding this? Yes. So normal length of the cycle is between 24 to 38 days. And regularity is, regular का मतलब है कि variation is 2 to 20 days. Then duration of flow. The normal duration of flow is between 4.5 to 8 days. 4.5 to 8 days. If flow is less than 4.5 days, it is hypomenorrhea. And if it is more than 8 days, menorrhagia. Hypomenorrhea and menorrhagia are older terms. तो अगर किसी को bleeding less than 4.5 days हो रही है, हम now we use the term shortened bleeding. अब बहुत easy terms use करते हैं. And अगर किसी को bleeding more than 8 days हो रही है, we do not say menorrhagia, now we say prolonged bleeding. Prolonged bleeding. Then volume of blood loss. Normal volume of blood loss is 20 to 80 ml. If blood loss is less than 20 ml, जिसको पहले हाइपोमेनोरिया ही कहते थे, अब कहते हैं लाइट ब्लीडिंग. And if blood loss is more than 80 ml, इसको पहले मेनोरेजिया कहते थे, अब कहते हैं हेवी ब्लीडिंग. हेवी ब्लीडिंग. Copied? Now, कुछ नहीं है. अब पहले हम ये कहते थे कि अगर लेस देन 20 ml ब्लीडिंग है तो हाइपोमेनोरिया है, अब कहते हैं लाइट ब्लीडिंग. और पहले कहते थे मोर देन 80 ml अगर ब्लीडिंग है तो मेनोरेजिया है, अब उसको हेवी ब्लीडिंग कहते हैं. There is nothing to explain. This is all what you will have to learn. How to measure it? That's a very good question. You cannot quantify that. उसके लिए आजकल there is something called as, I'll show you, a blood pictorial assessment chart. Right? Pictorial assessment chart available होते हैं. As a nursing student also you should know this, and as a medical student also.
कि देयर आर पिक्टोरल ब्लड असेसमेंट चार्ट्स। हम ये चार्ट पेशेंट को देते हैं और उसे कहते हैं कि जब ब्लीडिंग होए तो मार्क करे कि उसकी कैसी ब्लीडिंग हो रही थी। वो अपने पैड को चेक करेगी, अगर ब्लीडिंग कम है तो वो यहां पे टिक लगाएगी, अगर ब्लीडिंग मॉडरेट है तो यहां टिक लगाएगी, अगर पूरा स्टेन्ड है तो यहां पे टिक लगाएगी। इफ शी इज यूजिंग टेम्पोन्स, वी विल अगेन सी कि टेम्पोन्स कितने भरे हुए हैं। क्लॉट्स आ रहे हैं तो वी विल आस्क हर 50 पैसा कॉइन साइज था क्लॉट का कि 1 रुपी कॉइन साइज था, एंड पूरी फ्लडिंग हो रही है तो देन शी इज गोइंग टू पुट अ टिक हियर, and then we are going to take out a score of it and we are going to see कि score कितना है। अगर score 200 से ज्यादा आता है, that means बहुत excessive bleeding हो रही है patient को, right? So just know the name that there is a pictorial blood assessment chart which is available. As a nursing student भी a pictorial blood assessment chart पता होना चाहिए, as a medical student भी। So that is how you come to know कि patient को heavy bleeding हो रही है या कितनी bleeding हो रही है, right? Okay. Now earlier the term metrorrhagia was used, and metrorrhagia का मतलब था irregular cycles या intermenstrual bleeding. So if a female had irregular cycle or intermenstrual bleeding, हम term use करते थे metrorrhagia. Again, these days we do not use the term metrorrhagia. Irregular cycles के लिए हम irregular cycle word use करते हैं, and intermenstrual bleeding के लिए हम intermenstrual bleeding term use करते हैं. We no longer use the word metrorrhagia. Irregular cycles के लिए irregular cycles and intermenstrual bleeding के लिए intermenstrual bleeding, right? Then atypical uterine bleeding. So bleeding which does not follow the above normal characteristics is atypical uterine bleeding. Atypical uterine bleeding could be due to a number of causes, and in causes को याद रखने के लिए there is a standard acronym PALM-COEN, where P stands for polyp. So reason for atypical uterine bleeding could be polyp. A stands for adenomyosis. L stands for leiomyoma. M stands for malignancy or hyperplasia. C stands for coagulation disorders. O stands for ovulatory dysfunction, right? E stands for endometrial causes. I stands for iatrogenic. So अगर bleeding due to IUCDs या oral combined pills की वजह से हो रही है, and N stands for not yet classified. So these are the major causes of AUB, PALM-COEN: polyp, adenomyosis, leiomyoma, malignancy or hyperplasias, coagulation disorder. All names have been changed. अब कोई भी term नहीं use करते, menorrhagia, metrorrhagia, कुछ नहीं use करते, right? C for coagulation disorders, ovulatory dysfunction, endometrial causes, iatrogenic, and not yet classified. Ovulatory dysfunction includes anovulation. Ovulatory dysfunction includes AUBO, includes anovulation. अब एक कॉमन क्वेश्चन जो तुम लोग बहुत बार मेरे से पूछते हो कि मैम आपने DUB नहीं पढ़ाया. Up the term DUB is also not used, right? So earlier, heavy non-cyclical bleeding
which was not related to any structural lesions of uterus, infections, or systemic diseases, that was called as DUB. DUB का मतलब था any bleeding which is not happening due to polyp, which is not happening due to any infection, which is not happening due to any systemic disease. And ये जो DUB होता था, it was mostly due to an ovulation. So now we don't use the term DUB क्योंकि an ovulation is covered in AUBO. Right? So an ovulation is considered as a part of AUBO. अरे बाबा, शशि, लियोमायोमा क्या है? Leiomyoma is the other name for fibroid. Leiomyoma is the other name for fibroid. So yes, fibroid is covered in the list. So nowadays we don't use the term DUB. Instead of DUB, now we are using AUBO. तो इसीलिए हम केवल AUB पढ़ाते हैं अब there is nothing like DUB. Have you all understood? And I earlier also told you कि अगर एक patient AUB की आएगी आपके पास, तो कौन सी 3 drugs दे सकते हो उसको? Best is कि oral combined pills दो, then progesterone, and then tranexamic acid. So I hope you have understood normal characteristics of menstrual cycle and physiology of menstruation well. This is the basic of gynae. इसके बिना नहीं समझा जा सकता है gynae को. Right? So keep on revising. ये पूरे notes copy करना, एक बार revise करना, and you will understand. स्वराज, OCP क्या? OCP is oral combined pill, estrogen plus progesterone की pill, contraceptive pill. Tranexamic acid is pause injection. Any other doubts? Any doubts? Ask me quickly. I'll clear them. Okay. So, all the nursing students, I will see you once I come back to India. I'll take more of your sessions. And jitne bhi foreign medical Bishkek ke students hai, just now it is 3:35. I'm going to send you a link on Zoom. Take half an hour break and join me for the Zoom link. Right? Join me for further class. We will be on Zoom now. Okay? Take care. Bye. All the best, all of you.